The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced,
higher growth, and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well.
People are living better and earning better with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Viksit Bharat. Our vision for Viksit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian.
As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities. As many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the Eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified
as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed UWIN platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing
This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was 596 billion US dollars, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised its estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.3 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26.
The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues
from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker,
I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increasing GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy.
21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। What is fiscal deficit? When government's revenues from various sources fall short of its entire expenditure, it has to borrow money to meet the shortfall. The excess of expenditure over receipts is called fiscal deficit. Higher fiscal deficit may result in higher rate of inflation. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को हमें मिलकर के इसे सिद्ध करना है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या फिर हमारे फॉरेन पार्टनर्स, आत्मनिर्भर भारत सभी के लिए विन विन संकल्प है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज छठी बार बजट पेश किया है। सरकार ने हर चुनौती का सामना किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि देश में रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं और हम समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। तो अंतरिम बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और करीब करीब अगर हम देखें प्रतिबिंब तो ये 1 घंटे का बजट भाषण रहा जिसमें तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। यानी हम ये कहें कि 1 घंटे के अंदर समाहित ये बजट जरूर है। इसे एक छोटी स्पीच ही मानेंगे अगर बाकी बजट से तुलना करें प्रतिबिंब, लेकिन तमाम बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र अभी प्रतिबिंब भी कर रहे हैं। और वित्त मंत्री ने जिसका जिक्र किया है, उन्होंने गरीब, महिला और अन्नदाताओं पर बजट में जोर है, इस बात का जिक्र किया। साथ ही कहा है कि जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया और विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना सरकार की तरफ से लाई गई है। जी हाँ, और उच्च शिक्षा का लगातार उन्होंने अपने बजट भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के दाखिले उच्च शिक्षा में लगातार बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आईआईटी और आईआईएम की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वैश्विक स्तर पर जो बड़े विश्वविद्यालय हैं वो किस तरीके से भारत के साथ मिलकर भारत में ही अपने विश्वविद्यालय और कॉलेजेस खोल रहे हैं। और आवास को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बजट भाषण में कही हैं। बिल्कुल, हम एक बार फिर से सुनेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या-क्या बड़ी बातें कही हैं। कुछ ही देर में हम आपके सामने लेकर आएंगे। जिस बात का जिक्र है वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उसी को लेकर जो रोड मैप आगे रखा गया है कहीं ना कहीं वो हमें विकसित राष्ट्र बनने में मदद करेगा। 2030 तक जब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, इसका कहीं ना कहीं रास्ता तय किया गया है। पिछली बार जब हमने बजट में देखा था, ग्रीन ग्रोथ को लेकर सरकार का काफी ज्यादा फोकस था, क्योंकि जब हम इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जलवायु के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, विकास के रास्ते पर जलवायु के चिंता करते हुए हमें चलना है, इस पर हमने फोकस देखा था। आखिर किस तरह से ये बजट इस बार अहम साबित हो रहा है, कौन से ऐसे बड़े बड़े कदम है जिन पर सरकार का फोकस है, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है कहीं ना कहीं प्रतिबिंब, और जैसा हम लगातार सुबह से चर्चा भी कर रहे थे कि किसान, महिला, युवा, इन पर और जो गरीब हैं इन पर सरकार का बड़ा फोकस रह सकता है और इसी का जिक्र कहीं ना कहीं हमें
बजट में दिखाई भी और दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक के प्रयासों से अभी तक की योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिला किस तरीके से उद्यमशीलता बनी है और उसमें 28% की किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, और जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया कि किस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लगातार सरकार प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रही है। 7 नए IIT खोले गए हैं और इसके साथ ही 7 नए IIM भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बजट भाषण में डिजिटल ढांचे के विकास पर भी बात की गई और कहा कि सरकार का जोर लगातार डिजिटल ढांचे के विकास पर है। इसके अलावा जो बड़े कानून बनाए गए हैं उसका जिक्र भी लगातार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 3 तलाक को खत्म किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि डीबीटी के जरिए लोगों को 34 लाख करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए गए हैं और लोगों की आमदनी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. बिल्कुल जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिक्र भी किया और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि अमृत काल एक तरह से विजन जो सरकार आगे लेकर चल रही है, जब हम आजादी के 100 साल पूरे करेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र बनना है, हमें इसकी फाउंडेशन पिछले बजट में ले की जा चुकी है और उसी पथ पर आगे बढ़ने को लेकर ये जो बजट है, इस साल जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक अहम कड़ी साबित होगा। और वित्त मंत्री ने क्या कुछ हासिल किया पिछले कुछ वर्षों में इस सरकार ने, उसका जिक्र किया और क्या कुछ हासिल करना चाहती है अगले कुछ वर्षों में, उसका भी रोड मैप सबके सामने रखा। और वित्त मंत्री ने जीएसटी का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से एक राष्ट्र और एक बाजार बनाने में सरकार कहीं ना कहीं सफल रही है।
वित्त मंत्री ने लोगों की आमदनी बढ़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की आमदनी पिछले कुछ वर्षों में सरकार की योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से बढ़ी है। महंगाई जो है वो काबू में रखने में सरकार कामयाब रही है। सरकार जो है इस कहीं ना कहीं क्षेत्र में सफल रही है और G20 के सफल आयोजन का विशेष तौर पर वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में विशेष तौर पर जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, अब बजट पेश करने से पहले Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. प्रीति, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जोर वित्त मंत्री का इस पर रहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए क्या कुछ करने वाली है सरकार। बिल्कुल, और जब विकसित भारत की कल्पना सरकार की तरफ से की गई है और इस पर काम जारी है, तो इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो विकास है वो सर्वसमावेशी है, यानी हर वर्ग के विकास पर सरकार का फोकस है और कहीं ना कहीं यही बात सामने आज बजट के जरिए भी रखी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार के जो मौके हैं वो बढ़ रहे हैं और महंगाई पर जो काबू करने की कवायद है वो भी लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने जो हम लगातार बात कर रहे थे प्रतिबिंब टैक्स स्लैब को लेकर, हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव सबसे बाद में किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं। हाँ, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर जरूर घोषणा हुई है और उसे 22% तक घटा दिया गया है। तो टैक्स को लेकर भी जो घोषणाएं हैं उन पर भी हम बात करेंगे। विकास दर को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के मुकाबले जो भारत की विकास दर है वो उसका अनुमान काफी ज्यादा है और जो ये विकास का दौर है वो सरकार के रिफॉर्म्स के जरिए आगे तेज गति से और बढ़ेगा और इसको लेकर जो तमाम कदम है
सर्वसमावेशी विकास को लेकर जो बात कही है, चाहे वो घर देने की बात हो, बिजली, पानी, सड़क की बात हो, किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, इसे लेकर एक रोड मैप इस बजट के जरिए सामने आया है। पवन गोयनका हमारे साथ जुड़ गए हैं और रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। क्या कुछ लगता है इस बजट को लेकर? पवन गोयनका जी से भी सीआईए से जुड़ गए हैं। पवन जी, अंतरिम बजट था, बहुत कुछ जो है आशा नहीं थी लोगों की, लेकिन बार बार वित्त मंत्री ने एक बात पर जोर दिया, 2047 तक किस तरह से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसका रोड मैप है ये अंतरिम बजट। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर मैं कहूं कि इस बजट से एक चीज़ जो मैं लेके जा रहा हूं वो यही है कि ये सरकार का 2047 पर पूरा ध्यान है। हम किस तरह से आज 2024 से 2047 में विकसित भारत बने, और पूरी बजट में अगर आप देखें तो एक कॉन्फिडेंस का बजट इसे मानता हूं मैं, जिसमें कि सरकार ने बताया है कि जो हमने काम अभी तक किया है वो कितना सफल रहा और उसमें हम संदेह नहीं कर सकते हैं, और जो भी काम अभी आगे जाने वाला है उसमें हम कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लाइन में चल रहा है और उसे हम कैसे आगे बढ़ाएं तेजी से ताकि भारत विकसित भारत बन सके 2047 तक। तो एक जो कॉन्फिडेंस है इस बजट से सामने आ रहा है। हालांकि ये इंटरिम बजट था, इसलिए हमें कोई नई योजनाओं के बारे में हमें सोचना नहीं था और कोई भी टैक्सेस कम नहीं हुए हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी नंबर जो उन्होंने दिया वो फिस्कल डेफिसिट का 5.1% नंबर 24-25 में है। ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है 5.8% से फॉर द करंट ईयर। तो हालांकि ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि यहाँ सीआईआई में जो यहाँ हम मौजूद हैं, सभी जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बजट से। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने उसका एक बात और जिक्र किया, उन्होंने 5.1 का जिक्र तो किया, साथ ही ये कहा कि 4.5 तक लाने का प्रयास भी सरकार करेगी अगले 5 वर्षों में। जी, वो तो लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो है ही अपने सामने, लेकिन एटलीस्ट मेरा ये सोचना नहीं था कि एक साल में हम 5.9 जो बजट था पहले उससे हम 5.1 में आ जाएंगे, और ये उन्होंने किया है विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ कैपेक्स। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो सीआईआई ने जो पहले भी कहा था और हमने सबने कहा है कि कैपेक्स कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपेक्स ही हमें आगे बढ़ा रहा है, और उन्होंने कैपेक्स को 11% आगे बढ़ाया है अगले साल के लिए, और 3.4% जीडीपी। So without reducing capex, they are able to get the fiscal deficit down to 5.1%. I think that's a very big achievement, and talks a lot about the tax buoyancy that India has right now in terms of revenues that are happening, and how जितना भी हम खर्च कर रहे हैं सोशल स्कीम्स पे वो एक्सपेंडिचर काफ़ी सही मायने में हो रहा है, ताकि हम अननेसेसरी उसको एक्सपेंड ना करें, एंड वी पुट द मनी वेयर इट्स गोना मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी। बिल्कुल पवन जी, तो जिस बात का जिक्र किया गया कि ये अंतरिम बजट है और उसकी सीमा में ही ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा, तो आप मान रहे हैं कि अंतरिम बजट की सीमाओं में ही पेश एक बजट है? क्योंकि जब भी बजट होता है और खासकर चुनावी साल होता है तो बात कही जाती है कि लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है, पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है। उस बारीकी को आप कैसे देखते हैं, कैसे नापते हैं इस बजट को? पवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, वित्त मंत्री ने जिस बात का जिक्र किया था कि जो अंतरिम बजट है उसकी सीमाओं में ही ये बजट होगा, और हमने देखा भी कि जो बजट रहा वो करीब करीब 1 घंटे का बजट भाषण रहा वित्त मंत्री की तरफ से, और इसमें जो बड़ी बातें हुई हैं उसमें यही कहा गया कि हर भारतीय की आकांक्षा इस बजट के जरिए पूरी हो रही है, और जो सरकार का फोकस है, सरकार का विजन है, वो 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, और इसी दिशा में एक रोड मैप लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने जो बातें कही हैं वो बड़ी हाइलाइट्स आप देख पा रहे हैं। 2 करोड़ और आवास को 5 साल में पूरा किया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा, इसे लेकर जो तमाम प्रतिबद्धताएं हैं भारत की तरफ से वो पूरी की जाएंगी, और जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार
बना है भारत के अंदर। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कही गई और ये बात कही गई कि दुनिया इसे याद रखेगी। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार लगातार जोर दे रही है और इसी राह पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा भी जाएगा और स्किल लगातार लोगों की बढ़ाई जाएगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को लेकर और खासकर ग्रीन एनर्जी को लेकर, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इसकी बहुत बड़ा रोड मैप सामने आया था पिछले बजट में। आयुष्मान भारत योजना से काफी लाभ हुआ है और हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर जो लगातार फोकस है और इसके एक्सपेंडिचर को लगातार जो बढ़ाया जा रहा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से मजबूत किया जा रहा है, उसी बात को दोहराया गया है वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट में भी। आंगनबाड़ी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर भी तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सके। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है और विनियामक तंत्र को विकसित किया जाएगा। इस बात पर भी फोकस इस बजट में रखा गया है। और महिलाओं का जिक्र लगातार करते रही अपने बजट भाषण में। उद्यमशीलता किस तरीके से 28% तक महिलाओं की बढ़ी है उसका जिक्र किया। बिल्कुल प्रतिबिंब, और पवन जी जुड़ गए हैं, इस बात का भी हम जिक्र कर लेते हैं। जो उद्यमशीलता को लेकर आपने महिलाओं की बात कही कि 28% तक बढ़ी है। पवन जी, आप पहले आवाज आप तक नहीं आ रही थी, मैं ये जानना चाह रही थी कि वित्त मंत्री ने पहले इस बात का जिक्र किया कि जो अंतरिम बजट की सीमाएं हैं उसी दायरे में ये बजट लाया जाएगा। आप मानते हैं कि उसी लिमिटेशंस में ये बजट है, क्योंकि जब खासकर चुनाव का साल होता है तो ये माना जाता है कि पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, लेकिन आप मानते हैं उसी दायरे में सरकार कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ा रही है? 100%। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बजट में कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर जैसे हम सुनते हैं इलेक्शन ईयर में वो नहीं थे। जो भी स्कीम्स बताई गई वो पुरानी स्कीम्स को आगे लाने की बात हुई है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सरकार ने बजट बनाया है वोट लेने के लिए। और काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, हालांकि इंटरिम बजट था लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें कही गई हैं वित्त मंत्री के द्वारा कि जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि हम जब जुलाई में बजट सुनेंगे पूरा बजट तो उसमें काफ़ी कुछ एक रोड मैप जो उन्होंने बताया, ब्लूप्रिंट या वाइट पेपर जो बताया उन्होंने, विकसित भारत 2047 के बारे में सुनेंगे। और गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ सुना है इंडस्ट्री के द्वारा कि क्या करना है, कहाँ करना है। कई स्कीम्स चल रही हैं जो बजट में कुछ आती हैं कुछ नहीं आती हैं, लेकिन उन सब के द्वारा जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि स्पेस फॉर एग्जांपल जो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंतरिक्ष के लिए, उसमें भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है और उसको भी हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे विकसित भारत में, ये देखा जा रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा एज वेल एज इकोनॉमी के द्वारा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम शायद जुलाई में सुनेंगे, जो कि इंटरिम बजट में छोटा स्पीच था केवल 1 घंटे का, इसमें नहीं सुन पाए, लेकिन हम वो सुनेंगे जुलाई में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जुलाई बजट आएगा, वो बजट हमारे लिए अगले 5 साल की एक ब्लूप्रिंट होगी और उससे हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे 5 सालों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट पर जो चर्चा है वो आगे भी लगातार संसद टीवी पर लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम राज्यसभा की कार्यवाही के लिए आइए उसका सीधा प्रसारण देखते हैं। What is non-tax revenue? These are revenues generated from various services like medical services, electricity, and transport provided by the government. All receipts and expenditure from railways are routed through the Consolidated Fund. The most important receipts under this head are interest payments.